Hello, good morning students. Welcome to Indus Online Classes. And today we will continue with lesson 4 of Geography class 10th. This will be the lecture 6 of this lesson. And as it is a long chapter, it will take some more lectures to complete this lesson. And I will also send exercise question answers PDF of half of the lesson with this lecture, and remaining half will be sent after the completion of this lesson. And let's today discuss some more food crops. First one is tea. Tea is a good example of plantation agriculture. Plantation agriculture where a single crop is grown on a large area, and tea is a beverage crop. पेय पदार्थ है, पिया जाता है इसको. And tea was first introduced by Britishers in India, but now most of the tea plantations are owned by Indians. It is a tropical and subtropical crop. Tropical means the area between the two tropics, the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, and area beyond the tropics up to the circles is called subtropical area, that is Arctic Circle and Antarctic Circle. Tea is mainly grown in deep, fertile and well-drained soil. डीप फर्टाइल होनी चाहिए और वेल ड्रेन्ड, जिसमें इरिगेशन फैसिलिटी और प्रॉपर फ्लोइंग होनी चाहिए. एंड इट रिक्वायर्स ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, ह्यूमस, डेड एंड डिकेड मटेरियल एंड प्लांट मटेरियल. एंड इट रिक्वायर्स वार्म, मॉइस्ट एंड फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट. गर्म क्लाइमेट होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए और धुंध नहीं पड़नी चाहिए. एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट शावर्स स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर. पूरा साल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेन होनी चाहिए. इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप. इसमें लेबर ज़्यादा लगती है बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मैनुअल लेबर, हाथों से किया जाता है. एंड प्रोसेसिंग ऑफ द टी इज ऑल्सो डन इन द टी गार्डन्स. टी को लीव्स को ड्राई करना, उनको पैक करना, ये सब टी गार्डन में होता है. एंड मेन टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज असम in the Darjeeling and Jalpaiguri districts, and West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Meghalaya, Andhra Pradesh and Tripura. And in 2008, India was the third largest producer of tea after China and Turkey. And let us now study about the coffee. Coffee in 2008, India produced almost 3.2% of the total production of the world, and India's coffee is famous for its good quality. The Arabica variety of coffee that is grown in India was first brought from Yemen, and this coffee is in great demand throughout the world. And initially, शुरू में the production of coffee was restricted to Baba Budan Hills in Karnataka. But now, along with Karnataka, Kerala and Tamil Nadu are also large producers of coffee. Now let us come on to the horticulture crops. Horticulture means growing of fruits and vegetables. And in 2008, India was the second largest producer of fruits and vegetables after China. India produces tropical as well as subtropical fruits. And the main fruits like mango, it is mainly grown in Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh and West Bengal. And oranges are famous from Nagpur and Cherrapunji. And banana is mainly grown in Kerala, Mizoram, Maharashtra and Tamil Nadu. लीची एंड गवावा, अमरूद, ग्रो की जाते हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में. एंड मेघालय इज फेमस फॉर द ग्रोइंग ऑफ पाइनएप्पल्स. एंड ग्रेप्स, अंगूर मेनली ग्रोन किए जाते हैं आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और महाराष्ट्र में. एंड एप्पल्स, पियर्स, नाशपाती, एप्रिकोट, जिसको खुबानी या आलू बुखारा भी बोलते हैं, और walnut, अखरोट are mainly grown in Jammu and Kashmir and Himachal. So this is all for the day. Thank you and have a nice day.